special seminar on the multidisciplinary approaches in studies of medicinal plants for tackling pollution for urban population. So I'm Harshit, and I'll be introducing what this seminar is going to be about and some of our eminent personalities who will be conducting the seminar. So a little bit introduction about why this is important. I mean, obviously, pollution is a big problem for everybody, and being in cities like Delhi and Mumbai, we don't need introduction to the problem of pollution. But I think we do need introduction to why the multidisciplinary approach is important and why the medicinal plants are important in tackling pollution for the urban population. And that is what our seminar is going to be focusing on today. So we'll have four eminent personalities: um, Dr. Professor Hiranmai, Dr. Chetendra Singh, Dr. Parul Vats, and Professor Rama Bharti. So I would like to hand over the mic now to Professor Parul and Professor Hiranmai, and I hope you have a good time. Please feel free to send your questions in the chat, and I'll do my best to pass on those questions to the respective speakers as and when they get time. On to you, professors, now. Thank you. Thank you for giving the opportunity, first of all, and appreciate Pragyata for doing such a wonderful job that's reaching to the public regarding the significance of medicinal plants, and especially when it is for the current issue of tackling pollution in an urban conditions. So, medicinal plants, when we talk in terms of medicinal plants, we always connect ourselves with our ancestors. Either it was the great sages who described it in Vedas, or scientific development of it, which was achieved through the later Ayurvedic traditional system. So we know that every system is connected in India with its tradition or the culture. So the ancient knowledge of medicinal plant also we relate with the Lord Dhanvantari. That means he is a curative. He gives. So every Ayurvedic hospitals we know they first start with chanting the slokas, which will be for the healing of the patients who is there. Always that gives an immense importance in the society. Indian no, we can see it through different scriptures. Wherever we go, we can see the scriptures describing it in terms of plants, extracts from plants, and how it can be applicable to the situation. So even the plants, if we take in India and relate it with each state, the plants of the state or the trees of the state, they are also medicinal plants. The first and foremost that we call the neem, Sarvaroga Nivarani. So that Sarvaroga Nivarani came from the concept that able to cure many ailings, the ailings that we go through in everyday life. So early times, the name itself is that Azadiracta indica. That denotes that it is an Indian tree, which is of Indian origin. So the healing touch is developing from there. And it is also connected to the traditional system as well as the spirituality. We'll connect to a second network. Volume. Volume. Can kindly give us 2 minutes? We're fixing the network. Is it fine now? Yeah, it is Yeah, fine. okay, thank you. So should I repeat the earlier points or I can continue? You can continue, ma'am, with this slide. Okay, thank you. So in this case, another tree, if you see the Ficus religiosa, Mangifera indica, and most of these trees which are
which is native to India, and we know that they all have some or the other medicinal properties. Even we prefer that sitting under the neem tree or under the fig tree, it also eliminates many of the diseases. So a long term plans were decided in the earlier civilizations with them. And the Indian culture, when we see, it's having a connectivity with the plants. We used to their parts in worship. And even the homa we do in every conditions, they are also using so many medicinal plants. So they were all having a potential to eliminate the microbes from the condition environment, not complete removal, but the pathogens were reduced, we can say. And this also was helpful in improving the human health. And we know that Himalayas had a lot of medicinal plants. We can say lakhs of medicinal plants. But due to the human invasion and the changing climatic patterns or the civilizations, now we are losing them at a larger scale. Only those we identify, we are utilizing, and many a times it was exploited. We know that the rivers in or that starts from the Himalayas, most of them are considered to be the holy rivers in our country. This holiness, we can say, it's also related to its curative properties. The water is using, because when they pass through the hills, they are also carrying along with it the roots. They are touching the roots, or the leaves are falling into it. So they are also having that medicinal property transferred into the water. And when we come to the agricultural system, and we talk in terms of the traditional agricultural system, we had all those natural conditions where we had application of fertilizers which was naturally present. And at the beginning of the any seed sowing season, we had the celebrations which denotes that it will be in a holy means. And we know that we can see that the natural pesticides that were available, or the natural farming system which was using all the products from the nature, that's including the cow dung, cow's urine, water, and panchagavya that we know. Panchagavya was being used in every rituals, but its property is also antibiotic or antimicrobial. So it is also applied to the plants. So here we know that it also have the purifying properties on the air as well. In the modern technologies, again, we are going back to the green synthesis after the chemical invention. We know that during the Green Revolution, the demand was for the food production. So the quality was reduced. The native species of plants were also reduced. And there was addition of more chemicals. These chemicals have added more pollution to the soil, water, as well as air. So here we introduce the medicinal plants in current system, where we are having the synthesizing the uh, fertilizer, that is the nano level or the micro level, where the plants are used. So these can help in reducing the effects of chemicals and making the environment free of pollution. And we slowly India after independence have moved into or developed into urban region. That's mostly the city or the urban condition, where the population still we see the migration towards the urban region due to lack of agricultural facilities. Even in recent rains of last month, we can see, or this month, we see people are facing the difficulties where the agricultural crops are affected due to the hails or rainfall. So in this case, we need an alternative where the urban population is increasing. When increase of population is there is the waste dumping and the air is also getting polluted. So in this urban condition and the polluted environment, how we can manage these livelihoods. So here we comes with the proper planning, that we can say the urban areas can have plants in the sky touching buildings, where we can think of indoor plantation or terrace farming systems, and also the eco planning, where the urban dwellers or these architects can design it in such a way that the
the buildings are also having a place where there is a greenery. And we know that our traditions, when we relate to ourselves, now there are many stars which we relate, and all of them are connected again with the medicinal plants or the navagrahas, the 9 planets we worship. They are also connected with the medicinal plants. So such aspects can be considered here, where it can be planted into the buildings and it will be nurtured, so that the pollution will be reduced, and in addition we can also get the medicinal value. At this time we should also remember how we have reduced the pollution and utilized the medicinal plants during the lockdown time, when the COVID-19, at that time again the decoctions of medicinal plants were given the significance. So in both the reducing the pollution as well as improving the health, the medicinal plants were of use. So here we can say that plants have a multi benefits. It's giving you the physical as well as the mental benefits, where the stress can be relieved. Because everyday offices, we know we have 4 walls with the fans or ACs switched on. And when we reach home, and if we have some natural surroundings which will relieve the tension or the stress of the day. And also many plants have the ability to reduce the noise levels, because they can absorb. And even we know that the effect of all these pollutants, it can be reduced. So these ecosystem services can be provided in this condition. And most importantly, when we talk in terms of medicinal plants and ayush, we should also remember the place where it's given for the yoga and meditation, which can improve the quality of life. So it's the meditation practitioners, if they have the plants at home and they can do meditation, it will also improve the quality of plant and the lives, because they are also undergoing the abiotic and biotic stress within the life system. So these some of these plants are suggested by many, and we can see them commonly. And you have also initiated the circulation of these, or we can say you are creating a great awareness among the city dwellers, where they can adopt these plants in a smaller space and grow them well, and relieve from the pollution and also improve the health. And the meditation with plants, that's the yogic farming, which Ms. Parul Watts will be continuing with. Thank you, ma'am. So we have been doing research on yogic farming. So basically, our thoughts, they have a very intrinsic connection with nature, and we have been able to conduct some experiments and see that meditation helps to enhance the germination and growth in plants. It also helps increase the quality of soil by enhancing the growth of microbial population. Then there were several studies that were conducted which showed that the plants that were given the treatment of meditation, they had better nutrient content, enhanced yield, and of course, because it is under the umbrella of organic farming, it caused lower cost as compared to chemical treatments, thereby also enhancing the environment. And because meditation is involved, so there is a reduced suicidal rate or social violence in the societies when the such practices are practiced. Thank you, Parul. So here you can see an image where you can see a mother and a child. So the mother is teaching the child to survive in an urban environment with limited tree species. So this is an image of Gandhinagar, which was a planned city with greeneries. So this greenery could provide them the life. So always we consider the multi-speciality hospitals for the survival, but here we can see that the nature is providing its best to the organisms that are surviving here. So that itself indicates that how there is an importance of medicinal plants in the nature, which can give the oxygen as well as life. So Ministry of Ayush is always focusing with a vision where they can give the healthcare system is native to us.
And most of these Ayurveda, yoga, naturopathy, Unani, Siddha, and homeopathic, these are practiced. But when we have more ailments, we approach to the multi-speciality hospitals. That's our conditions. But if we can practice the natural way of living, we can reduce the utility where we need to depend on the such medicinal practices and depend more on the medicinal plants. So thank you. And if there are any questions, you can just continue with it. Okay. Thank you, Hiranmay ma'am, and thank you, Parul, for this wonderful presentation. And Thank you. now, uh, let's. If there are any questions, we can take them. Uh, Session बंद कर दो. If there are any questions from panelists yeah, or we will add audiences later. Let Dr. Selinder speak. Hello, sir. okay, can we leave? Dr. Selinder, am I audible? Yes, you are audible, sir, and And thank you very much for Professor Hiranmai. And it is really interesting and very important topic which we have taken today to address our urban population, not only in urban, but it is growing in some extent in the small towns also, and the rural also having kinds of pollution. So medicinal plant has a value in all human beings. Maybe it's a need to address in the urban population first, but slowly it is need to every family to understand the value of this medicinal plant in our life, healthy life. And very rightly, it's a very nicely explained by Professor Hiranmai and her student. So, if I am here just to support to this as a panelist to this, and would if and no question is from the audience, then I would like to make a question here that if I am a because I am living in Gurgaon, and we I am suffering from this air pollution, specifically no from the particular matters. I think so, madam, if you can highlight how what are the things we can do to keep our home free from this matter. And we people of urban area are very concerned for the morning walk and jogging, if we can do, but we are very concerned with this particular matter in the air, which is harming us in mostly in the urban this Delhi kind of environment. So, what is your advice, and what common people should do if they want to do some exercise or morning walk or running? How they can save themselves free, keep themselves safe from this side effect of air pollution? Remains the same. That how we can protect ourselves from the pollution. Am I audible? Yes, ma'am. Okay. Yes, yes, So yes. the You're question audible. comes here when Can we have your camera so as also we on? have no, there was a network issue. That's why we Okay, didn't switch okay, on the okay, camera. okay. Because in earlier case also we start connectivity issue. Here we can say that in the early morning walk in any city has become a difficult task, but the construction mostly affect urban parks. Urban parks where there are more trees with medicinal properties, especially the fast-growing trees like Cassia pistila, which can suit any environment, and the neem trees. When planted, we can say that this pollution, also know that so here these and we I also think, wait.
I think we are having some network issue at Network issues, yeah. end. Let us introduce Dr. Puran Chand. Hello, sir. बीच में घूमा ना. Hello, sir. Dr. Puran, are you available? I think Dr. Puran is not available right now. Uh, सो मेरा भी एक क्वेश्चन है छोटा सा विद पारुल। ये जो हम मेडिसिनल प्लांट्स को पोल्यूशन से कम पोल्यूशन को मेडिसिनल प्लांट्स से कैसे कम कर सकते हैं? मतलब मेडिसिनल प्लांट्स ऐसे होते हैं जो ज्यादा पोल्यूशन अब्सॉर्ब कर सकें या कुछ? एफिशिएंसी डिपेंड करती है फ्रॉम ट्री टू ट्री कि वो कितना अब्जॉर्प्शन कर सकते हैं, बट मेडिसिनल प्लांट वो एफिशिएंसी के साथ साथ बॉडी को वो एडेड इम्यूनिटी देता है. So that is why medicinal plants are recommended more, because it tackles in two ways. One, it will do its job as a tree of absorbing the pollutants or transforming their state. Two, when you consume it, it makes your immune system or your physical system more stronger to address the any ailment which is caused due to pollution. I think in this one is very concerned that air pollution, मेरा मानना है कि air pollution के लिए all plants are very good. Only you need to select the plants for indoor, which are good in indoor. And if you are talking about the outside environment, you need to select the plants which are suit to which are good for the external environment. So as far as this medicinal values has two kinds of values. One is keeping our air fresh, which I think all plants contribute, and the other value is we can take the parts of those plants inside, and they provide us immunity. So that has a immunity value, and they are, I think, good as a medicinal plant. Because in urban population we are suffering we are very sensitive, and we are mostly in a viral environment, and this viral infection is very now common in our areas. If small changes happens, the virus favorable conditions comes, and we are having very high density population and low small houses, so air ventilation also has a problem. So these things gives a favor to the viruses, and where indoor plants, which may be a medicinal or which is good to which are good indoor plants, are good to absorb these pollutants in the airs and makes air fresh at home. And on the roadside also, which are advisable, good green plants, and which are evergreen plants, and there are many things on selection of plants. They are also good. So I am from an agriculture point of view, I advise go for plant, whether it is indoor or outdoor, which is suitable to your environment. If you want to only address the air pollution, but if you want to address, like today we are having this asthmatic problems, so there must be some value of plants which are we are taking into, and they are helpful. I am not expert of this medicinal plants values and their contribution in our each and every problems. But as far as air pollution, I think if we are having good plants in home, they are also keep us they are good to have a this air pollution control or preventing. Thank you, Parul. Thank you, sir, for I think spreading Dr. your Puran Chand is now. thoughts. Dr. Yeah, Puran Chand. Dr. Puran and Dr. Rama are both are available. Hello, sir. Hello, ma'am. Yes, yes. Good evening to all of Hello. you. How are you all? Fine, sir. Sorry, I am unable to connect with the due to network और उसमें कई प्रॉब्लम हुई, इसलिए माफी चाहेंगे.
हाँ जी। तो सर आप भी कुछ बताइए पोल्यूशन का, मेडिसिनल प्लांट्स का पोल्यूशन के साथ क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है जिससे हम अपने uh, को जी बेनिफिट जी दे। जी एक्चुअली हर एक व्यक्ति को इन्वायरमेंट के लिए, नेचर के लिए ऑक्सीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना। और पेड़ ही हमें सहायक हैं, पेड़ ही हमारे जीवन को सुंदर बनाते हैं। तो जो WHO के रूल्स हैं उसमें से 5 से 8 पेड़ घर पे जरूर लगाने चाहिए। आप मान लो उस दिन एक क्वेश्चन आया कि सर इतनी मतलब सफोकेटेड एंड पॉल्यूटेड सिटी में आप प्राणायाम कैसे कर सकते हैं, तो उसका क्या सॉल्यूशन है। उसका सॉल्यूशन यही है कि आप अपने लाइफ स्टाइल को थोड़ा चेंज करें, प्रकृति को प्यार करें और घर में कम से कम 5 पेड़ जरूर लगाएं। आप बालकनी में जरूर, जिससे जो ऑक्सीजनेटेड आपका एटमॉस्फेयर बने और फिर आप प्राणायाम भी कर पाएंगे, आप शुद्ध हवा ले पाएंगे। और हर एक व्यक्ति का इसमें जिम्मेदारी है और हर एक व्यक्ति को उसमें थोड़ा जरूर सहयोग देना चाहिए। और वो पेड़ से जब आप थोड़ा सा इनलाइटेंड होते हो, जो सेंसिटिव होते हो, तो पेड़ आपको वो जो सुंदरता देते हैं, वो जो अनुभूति देते हैं, वो जो प्रेम देते हैं, उससे आप धीरे धीरे हम एक यूनिवर्स के अंदर चारों तरफ एक अमन चैन जिसे बोलते हैं, शुद्ध हृदय, शुद्ध शरीर और शुद्ध मन विकसित कर सकते हैं। तो हर एक व्यक्ति को एनवायरमेंट के लिए पेड़ जरूर लगाने चाहिए। और अब देखो एक और बात है कि आप मेडिसिनल की बात करें, सपोज दैट किसी व्यक्ति को खाने में प्रॉब्लम है, तो आप जो त्रिफला पाउडर है ना वो ले लेंगे। मतलब हर एक आयुर्वेदिक फॉर्म से भी, हर्बल फॉर्म से भी पेड़ हमारे जीवन के जो पंच महाभूत से बॉडी बनी हुई है वही काम करते हैं। तो हमें थोड़ा सा सजगता की जरूरत है, थोड़ा सा अवेयरनेस की जरूरत है। और मुझे ऐसा लगता है कि प्रज्ञाता फाउंडेशन ने जो इनिशिएटिव लिया है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ मिलकर के, उससे एक सजगता आएगी, उससे एक अवेयरनेस आएगी और वो अवेयरनेस धीरे धीरे हम समाज में चारों तरफ फैलेगी। तो मैं सजेशन यही करूंगा कि हमें ज्यादा से ज्यादा नेचर की तरफ, प्रकृति की तरफ ध्यान देना है, सजगता बढ़ानी है। और अपने हमें हाई राइज बिल्डिंग तो सपोज दैट स्पेस नहीं है तो वो लेनी जरूर है, लेकिन उस हाई राइज बिल्डिंग में भी आजकल जो हाइब्रिड एंड वो बहुत सारी टेक्नोलॉजी आई, डॉक्टर शैलेंद्र सर बताएंगे, वो एग्रीकल्चर में है कि किस तरह से वो जीवन को सुंदर बना सकते हैं। तो हमें थोड़ा सा प्रकृति का सहारा लेना चाहिए, यही मैं सजेशन दूंगा। और थैंक यू। Is the question from Josh Moments. Sir, kindly share the name of some indoor plants to detoxify air pollution at home. So let's Rama ma'am speak first, and then we will have answer to this question. Hello, Rama ma'am. Hello, I think I should put on the camera. Hello, good evening, everybody. I just entered home, just dropped in. Dr. Shailendra, hello. Sorry for this, uh, haphazard situation. Just entered home after office, and we already had this seminar on that day discussing about the importance of medicinal plants. Uh, in relation to pollution, specifically air pollution and other pollutants. So, I would like to mention one thing that of late I got to understand. Earlier, used to discriminate normal plants and medicinal plants a lot. But now, of late, I got to understand that all plants are medicinally important. If they are providing you oxygen is medicine for you. Simple. So there is a very thin line between these situations wherein we haven't identified some plants, their parts that which part is used for what purpose. So we don't know for certain plants, so we cannot say. But for plants wherein we have done a lot of research and we have documented things. We know what to grow, where, when. Like I would speak about Delhi NCR because my PhD work was on medicinal plants in Delhi NCR, and it was long back in 2000. Badarpur thermal power plant and that area I was doing, you can't imagine. It is a personal experience I should share that when we used to go to that side of the ridge, the plant size was reduced, the leaf was really in bad, and there is a lot of deformities with the plants and also humans. You can see the
they have asthmatic situations, they have eyesight problems, even I could see a hair loss and graying of hair with some people. So it was like 5 years when I was doing research, I could understand that it is a give and take relationship. Simple. If we take care of these plants, they will also take care of us. So the more we keep our environment clean, the more they will help us. For me, like I would suggest not only keep few plants at home, you can plant anywhere. Like I can take my example, wherever I go, whenever I find some situation, I just try to plant some plants. In fact, when I do this, people laugh on me. अरे इसका फल तो मैडम कोई और खाएगा. मैंने कहा कोई तो खाएगा. चिड़िया खाएगी, पक्षी खाएगी, कोई इंसान खाएंगे, या किसी के काम आएगा, या शुद्ध हवा भी होगा. तो उससे भी आपको जो सुख मिलेगा, the kind of satisfaction you will get will be immense. So for me, what I suggest people is today, I wouldn't say specifically on because I got to see one lecture which was very perfect and specific on medicinal things. Or Dr. Shailendra is also like expert in this. But what I would say today, at this point of time, we should start loving plants like humans, like a member of our family. We should grow them, we should nurture them, and we should take care of them, because we need a care. It is like give and take relation between both of us. And we cannot like COVID has given us a good lesson, you see, that if we have a healthy air, we can fight with so many things. If we have a healthy environment, our immunity system will be strong. We can fight with these viruses or other uh, diseases. So for me, we should try to invest. Like what I do is, like of late, it is now 2.5 decades. What I do is, whenever there is some marriage anniversary, some birthday, something, I always gift people plants in beautiful pots so that they can decorate at home. And once they get this habit of getting these beautiful pots at home, they try to multiply it. So that is also a good way to like make people understand Yes. that it is not just uh, a kind of gift. It is also a gift which is live, which grows. So at in my office area also, I've grown small plants, and I've kept some pots wherever. Like you can't say that you don't have a space. Everyone has a space. It's just space should be in your mind to take care of plants for the better survival. And medicinal plants, there are n number of medicinal plants which you can take name tulsi, aloe vera, and like adrak, lasun, whatever you see, neem, tulsi, neem, uh, amla. For me, like I feel that every plant has some or the other medicinal effect. It's just we are aware or we are not aware. So not for only medicine, but also for taking care of our immunity system and balancing out the ecosystem, we need to take care of plants. And it is a high time for, especially we should they say that it is we should catch them young. So we should also inculcate these good habits or these sanskars in our children in schools. And such programs should be. Pragyata is, I congratulate Pragyata doing such a wonderful job. I would also appreciate if they go and do these works, and especially primary schools and other places wherein uh, children get motivated, they get understand, because that is the growing brain wherein things will fix up. Now they will take it to their longer age, you can say. So with this, I would thank Pragyata for inviting me, and also my all fellow speakers with a lot of enlightenment. Thank you.
Thanks a lot. Thank you, ma'am. Thank you for sharing your views. Just to add, because the question is kindly share the name of some indoor plants. I just have a one good research on this COVID time. I can refer that, and there are 15 plants are very well studied to be recommended in the indoors to makes your air healthy and just means keep your houses virus free and some extent the pollutant. I can name with their effect on the pollution. You can, if people are here, the ficus family is very important, like weeping Yes. fig, the ficus benjaminia. It has effect on bacteria, antimycetes, and mold, because these are grown on a high humidity zone, and when these plants are there, they can create less humidity, and therefore this fungus and this bacteria and viruses are not grown. And also it has a effect on formaldehyde, volatile organic compounds in your houses where the plants are. So ficus ali also is good, and peace lily is also good to against the benzene. It reduce this indoor pollutants. And erica palm, it is also work against ammonia. Corn plant, they are also against ozone and benzene. Lady palm, they are also working on various formaldehyde and other pollutants. So dump can, there is renki. So there are these are the plants which you can use in house to make your house air free from some of gaseous pollutants. And also it help in against the growth of these viruses. So yes, you can go with there are 15. Snake plant is also good. Umbrella grass is also good. Arrowhead vines is very good. Golden pothos is so. There are some already shown in the first presentation, I think. So this is the answer to your questions. And I think next is क्या हम कोई indoor plant लगा सकते हैं room में तो to purify? Yes, these plants which I told you, Mr. Vivek, it is very, these are the plants. And there are so many plants. There are so many plants. If you are any indoor plants is good. There are only the level of because some are very having little advantage in indoor than the others. So yes, you can book or you can. And very important message, madam, you said is now we should have in our habit to give gifting each other indoor plants, at least in the urban, so that the Absolutely. culture will grow in ourselves. And once we give it, we also say take care it next year when we want to see how this plant is at home. So it is not only gifting, also giving a responsibility to our guests that you need to take care as a baby. I'm giving my baby to you to take care, and this way we can make more good culture in our urban cities. Though today people are very aware, they love this plantation in house because they give the, it's a good landscape, good it's a give means beautify your room in the house also. So I think it's very important things you shared in your talk. And next question is Pius was, in today's world much of the population is unaware about tracing such plants nearby. Can't there be inclusion of such knowledge curriculum at secondary level with practical application? I think, ma'am, this is for the institute, so you can answer or anybody can answer on this. Parul, can you answer this? Yes, I think definitely such practical applications need to be implemented at a very basic level, especially in India. All our activities, be it festival, be it any traditional activities, they are associated with plants. So people should know about the importance of that plant in scientific terms. It should not be related to blind faith or just cultural activities, but it also be scientifically proven to the generation that are
basically we are in that stage when each and every child in India knows that in these positions these things are done, but the scientific basis that needs to be anchored at a very school level, at secondary, Yes. primary level. So it is very important to take this knowledge from the kids level, so they will be more aware of this plant's Yeah, benefit. we They need can to even use their emphasize. parents to bring such plants at home. Yeah. So Yeah, that we also need be. to inculcate that habit in our children to make a more responsible society. And in fact, I see a lot of, since in ministry, I see there's a lot of schools, they bring their students for a kind of tour, and they discuss about the plants, and they discuss about the conservation, and they discuss about sustainability. So many public schools are already into like in teaching this. In fact, there is a chapter for this in because I was recently, my son was writing board, and in science they have one chapter for uh, environment. So they teach these topics there. But for me, I think it should be taken more rigorously, wherein uh, children should be make consciously responsible for saving their environment, for creating this niche for plants, and plants which are life saving for them, and other plants which are also for beautification, other purpose. Like they should love plants, because it is a harmony between the two can only make the world beautiful. I should say it like that. This is our responsibility. In fact, I would like to mention one thing here. Prime Minister Modi ji has committed in UNCCD for uh, greening India for with 26 million hectare by 2030. So if we have to increase 26 million hectare more forest in this country by 2030, why not? We should have a drive with the students, with the college, with all the institutes come together to do this plantation, a plantation which makes a sense for people. So I think with this, I should say thank you to everyone. ओके, तो मेरा भी एक छोटा सा क्वेश्चन है कि ये लीव्स का साइज का कुछ इम्पैक्ट पड़ता है क्या प्लांट्स पे, कि बड़ी लीव्स वाले प्लांट ज्यादा पोल्यूशन एब्जॉर्ब करते हैं, छोटी लीव्स वाले कम करते हैं, ऐसा कुछ है क्या? देखिए, ऐसा तो नहीं होता है कि बड़ी लीज वाले ज्यादा करते हैं, छोटी का कम करते हैं। हाँ, छोटी लीव्स होती हैं तो उसमें लीव्स ज्यादा होती हैं, बड़ी लीव्स होती है तो उसमें कम होती है। ट्री के तो साइज अलग अलग होते हैं, आप एक ही साइज के पेड़ पौधे तो रख नहीं सकते हैं। आ, इसमें जो अगर पॉल्यूटेंट्स और डस्ट पार्टिकल्स एब्जॉर्ब करते हैं तो वो स्टोमेटल अपर्चर्स होते हैं। स्टोमेटा की ओपनिंग कितनी है, कुछ छोटे पौधे होते हैं बट उनके स्टोमेटल ओपनिंग्स इतनी अच्छी होती है कि उसमें डस्ट पार्टिकल्स, गैसियस, सब चीजें बहुत फटाफट एब्जॉर्ब हो जाती हैं। और आप देखेंगे भी वो पौधे ज्यादातर सड़कों के दोनों तरफ लगाए हुए होते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि उस पौधे का जो इंटरनल सिस्टम है वो किस तरह का है। ऑब्वियसली बड़ी लीफ है तो उसका सरफेस एरिया बड़ा होगा, उसमें ज्यादा पोर्स होंगे, बट इसका ये मतलब नहीं है कि वो सब कुछ एब्जॉर्ब कर ले। कभी कभी बड़े पेड़ जो हैं उसको सस्टेन नहीं कर पाते, कभी कभी बड़े पेड़ बहुत स्ट्रांग होते हैं, हार्डी होते हैं, तो सस्टेन कर लेते हैं। तो इसमें हमेशा हमें मिक्स एंड मैच रखना चाहिए, क्योंकि छोटे पौधों को छोटी जगह भी में भी सरवाइव किया जा सकता है। स्पेशली सड़कों के इधर उधर किनारे, यहाँ वहाँ बड़े बड़े दरख्त आप लगा सकते हैं, बट जो छोटे एरियाज होते हैं जहाँ पे आप बड़ा कुछ नहीं लगा सकते, वहां छोटा लगा सकते हैं। तो इट इज ऑलवेज अ मिक्स एंड मैच ऑफ ट्रीज, हर्ब्स एंड श्रब्स, एंड उनका हमें एक कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है कि उसको किस तरह से प्लान किया जाए। अब आपके घर बालकनी में जगह इतनी है कि आप 4 बड़े पौधे लगा लें और 14 आप जो है वो
छोटे लगा लें, तो फॉर मी पर्सनली आई वुड सजेस्ट कि वो छोटे लगा लें, बिकॉज यू विल गेट द वेराइटी। Okay, ma'am. Thank you. या जो क्वेश्चन आपका था बॉस वो बहुत रिलेवेंट है। एंड जैसा मैडम ने बताया, द पर्पस पर्पस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बिहार पे प्लांट्स का सिलेक्शन करना होता है। अगर ब्रॉडर लीव्स, जैसा कि अगर मैं आपकी बात करूं, म्युनिसिपल प्लांटेशन की बात करूं, तो उनको जो सजेशन दिया जाता है फ्रॉम हॉर्टिकल्चर बोर्ड, उनको ये बताया जाता है कि यू नीड टू गो फॉर ए broader leaves plants, because they have a better canopy, they can make a shed, so जो dust particles को वो रोक सकते हैं। एंड सेकंड इज जो जितना हेयरी, जैसे मैडम ने बताया, जितना उसमें जो उनका लीव्स साइज जितना मोटा होगा, मतलब थिक थिक लीव्स के प्लांट्स को सिलेक्ट किया जाता है फॉर एब्जॉर्ब गुड, दे आर गुड एब्जॉर्बेंट, मतलब वो एयर को अच्छा से एब्जॉर्ब करते हैं साहब। क्योंकि जितना भी फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन एक्टिविटी होती है, यही एक गैसियस एक्सचेंज का माध्यम होता है। in photosynthesis, plant absorb the CO2 and they release the oxygen. With the CO2, the carbon जो आपका एयर का है वो सारा कार्बन एब्जॉर्ब हो जाता है। एंड सो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कितना लीफ एरिया है, एंड लीफ एरिया इज डिसाइड द फोटोसिंथेसिस, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द लीफ एरिया कितना अच्छा फोटोसिंथेसिस होता है। लेकिन जब हम पॉल्यूशन की बात करते हैं तो उसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस तरीके के पॉल्यूशन को हमको एड्रेस करना, उसी के हिसाब से प्लांटेशन को प्लान किया जाता है। सो बोथ आर ओके। लाइक जैसे कहते हैं कि नीम बहुत अच्छा प्लांट है, तो पोंगेमिया के प्लांट्स भी बहुत अच्छे हैं, पीपल आपका बहुत अच्छा है, और कुछ कुछ प्लांट्स बस इसमें इतने होते हैं जो 24 आवर ऑक्सीजन रिलीज करने वाले होते हैं। सो उनका एक अपना अलग ट्रेंड है। पर जो क्वेश्चन आपका था कि ब्रॉडर लीव्स और शॉर्ट लीव्स, सो ब्रॉडर लीव इज मोर प्रेफर्ड इन आउटसाइड, एंड आई थिंक दे आर विद फिक्स लीव्स वाले प्लांट्स को हमको ज्यादा प्रमोट करना चाहिए आउटसाइड। और मेरे को लगता है कि इसमें गैसियस एक्सचेंज जो होगा वो ब्रॉडर लीफ का ज्यादा होगा। मैडम, जस्ट टू आई एम मे बी आई एम लिटिल डिफरिंग फ्रॉम योर पॉइंट, बट मेरा को जितना अंडरस्टैंडिंग वो यही है कि लीफ एरिया जितना ज्यादा अच्छा होगा उतना अच्छा फोटोसिंथेसिस होगा, मींस गैसियस एक्सचेंज उतना अच्छा होगा। यस, आई वुड लाइक टू ऐड दिस। हाँ, ये आपने ठीक कहा है कि लीफ सरफेस, वो मैंने बताया ही कि उतने ज्यादा स्टोमेटल पोर्स होंगे, उतने ज्यादा एब्जॉर्प्शन और रिलीज हो। बट एट द सेम टाइम हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट डाइवर्सिटी का भी होता है, क्योंकि हमें स्पीशीज पे भी वर्क करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये स्पीशी हमें बहुत फायदा दे रही है, हम उसको बहुत ज्यादा प्रमोट कर लें और उसी को देखते जाएं, और फिर ऑफ लेट किसी और स्पीशी पे रिसर्च हो कि अच्छा ये भी फायदेमंद थी। सो डाइवर्सिटी और जो इम्पोर्टेंट है ही है, और उसके साथ आपकी जगह और उस जगह की रिक्वायरमेंट क्या है, उसके अनुसार सिलेक्शन करना पड़ता है। तो उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स आते हैं। आप रैंडमली आप अपने घर में चुनना चाहेंगे, तो आपका घर अगर आगे पीछे जमीन है, तो आप ऑब्वियसली आई वुड सजेस्ट कि आप ट्रीज लगाएं और बुशेस लगाएं, श्रब्स लगाएं, ये सब लगाएं। अगर आपका घर किसी फ्लोर पे है जहाँ छोटी सी बालकनी है, तो आई वुड सजेस्ट कि हर्ब्स लगाएं, मेडिसिनल छोटी छोटी हर्ब्स, जो जैसे करी पत्ता हो गया, तुलसी हो गई, एलोवेरा हो गया, लेमन ग्रास हो गया, डे टू डे यूज में जो चीजें आती हैं वो लगाएं। तो ये हमेशा रिक्वायरमेंट होती है कि हमारी जगह कितनी है और हम उसमें कितनी अच्छे से डाइवर्सिटी को मेंटेन करके प्लांटेशन करते हैं। अब ऐसा नहीं कि घर में 10 तुलसी लगा ली, क्योंकि तुलसी जो है पाइस ट्री है, तो अब हम पाइस प्लांट है, तो अब हम सब तुलसी करें क्योंकि आज रामा तुलसी, श्यामा तुलसी, ये वो। तो आई वुड सजेस्ट कि आप सभी स्पीशीज जो जो आप कर सकते हैं मैनेज, वो सब पे। डाइवर्सिटी, जी, डाइवर्सिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, डाइवर्सिटी से ही एक और चीज ड्राइव होती है। क्या ऐसा होता है कि कुछ बर्ड की स्पीसीज या ये हाँ छोटे हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही छोटे कहा। हाँ, कुछ ये अपना पर्टिकुलर एक ट्रीज को देख के उस पे नेस्ट वगैरह बनाती हैं, या ऐसा कुछ होता
होता है इसमें? मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि देखिए डाइवर्सिटी, कुछ पौधों की कुछ सेंट्स होती है जिनसे कुछ पर्टिकुलर तरह की भंवरे, तितलियां और इंसेक्ट्स उनसे अट्रैक्ट होते हैं। तो ये सिर्फ प्लांट डाइवर्सिटी से एनिमल डाइवर्सिटी भी मेंटेन होती है। ठीक है, स्पीशीज की क्या क्या, अच्छा और रही बात ये कि भाई ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेड़ों पे ही घोंसले बनते हैं। मैं अपनी बालकनी में देखती हूँ कि छोटी सी चिड़िया आती है, मैं शायद उसकी स्पीशी नहीं पहचानती हूँ, पर उसने एक करी पत्ते के ऊपर ही अपना तिनका सा घोंसला बना लिया, बिकॉज उसके लिए वो जगह सफिशिएंट है। तो अगर कबूतर बनाएगा या कोई तोता बनाएगा, जो कि कौवे बनाएंगे, तो वो नीम को चुन लेंगे, आसपास वो भी होगा। तो अगेन डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी से क्या होता है कि डिफरेंट सेंट्स, जो कि कुछ सेंट्स हम पकड़ लेते हैं, खुशबुएं, कुछ हम पकड़ नहीं पाते हैं। आई तो थिंक वो वो एनिमल्स, स्पैरो होगा मैम। जी स्पैरो बर्ड ही होंगी जो छोटी सी होती है घरों में पहले। नहीं, स्पैरो नहीं है वो, बहुत स्पैरो तो गौरैया होती है ना, उसको तो सभी पहचान लेते हैं। मतलब मैं बहुत सारी, मतलब इनफैक्ट मैं बहुत बर्ड्स को पहचान लेती हूँ, लेकिन ये बर्ड इतनी छोटी है कि क्या? वो मुझे शायद इतनी सी लगती है, छोटी सी, तो मैं उसको ओके। आइडेंटिफाई नहीं कर पाती हूँ। मुझे लगता है कि मैं उसकी फोटो खींच के फिर वो आइडेंटिफाई करूंगी कभी। तो बहुत छोटी है, विद अ बिगर बीक। हाँ, मतलब हमिंग बर्ड भी नहीं है वो, इट इज अ काइंड ऑफ वेरी स्मॉल, मतलब टाइनी बर्ड। इतनी छोटी बर्ड देखी नहीं जाती है यूजुअली। तो ये डिपेंड करता है कि किस तरह की, अलग अलग तरह के इंसेक्ट्स, अलग अलग तरह की फ्लाइज, अलग अलग तरह के पक्षियों को अलग अलग खुशबुएं जो है अट्रैक्ट करती हैं। तो इसीलिए डाइवर्सिटी को मेंटेन करना भी एक हमारा जो है कॉशियस एफर्ट होना चाहिए। और उस कॉशियस एफर्ट में हमें जो पेड़ हमें फायदा दे रहा है, तभी मैंने कहा कि मेडिसिनल प्लांट्स एक अपनी जगह बात है। जो पेड़ हमें नहीं भी पता है कि हमें फायदा दे रहा है, तो भी वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी को फायदा दे रहा है, और आपको ऑक्सीजन तो दे ही रहा है। तो इसलिए आप अगर जानते हैं मेडिसिनल प्लांट्स, उनको आइडेंटिफाई करके अपने पास लगाते हैं, दैट इज रियली गुड। अगर उसके अलावा भी आपके पास जगह बचती है, तो आप जिसको नहीं भी जानते, वो सिर्फ ब्यूटिफिकेशन के लिए लगाते हैं। तो जैसे चाइनीज रोज था, जिसको हम गुड़हल कहते हैं, वो मैं बहुत खुशबुओं के लिए और वैसे ही सुंदरता के लिए लगाती थी। फिर ऑफ लेट मुझे पता चला कि उसकी चाय होती है, एंड दैट इज मेडिसिनली इम्पोर्टेंट। ऑफ लेट मतलब बहुत समय बाद पता चला, तो अब उसकी चाय पीते हैं हम, वो मेडिसिनली इम्पोर्टेंट है, तो उसको आप लगा रहे हैं, उसकी ब्यूटी भी है अपनी जगह। तो इस तरह बहुत चीजें हैं जिनको कि आप जब इस चीज में घुसते हैं ना, तो एक्सपीरियंस जो होता है ना, वो कहते हैं कि एक्सपीरियंस से वो कुछ करते रह जाते हैं। जब आप और नई नई चीजें सीखते हैं, आपकी अवेयरनेस बढ़ती है। नहीं, और वो डॉक्टर साहब ने लिखा है मैम, टेलर बर्ड या सन बर्ड। हम्म। सनबर्ड हो सकता है, वो बहुत छोटी है, मैं उसकी फोटोग्राफ खींचना चाहती हूँ, पर वो फुर से उड़ जाती है। एंड इट इज वो लाइक 5:30 to 6 के बीच में रहती है वो, और वो इतना छोटा कड़ी पत्ता पे लटका हुआ घोंसला बना चुकी है। सो इट इज लाइक दैट। तो आई थिंक any लेट more? अस Yeah, that's good. मैं Any more इसमें questions? थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग। डॉक्टर शैलेंद्र जी और मैम ने बताया, एक्चुअली मेरी मॉर्निंग योग सेशंस होते हैं ना, छोटी छोटी गौरैया और एक बहुत मधुर आवाज की, एक मैं उसका नाम नहीं समझ पाया अभी तक, लेकिन इतनी साउंड क्रिएट करती है वो कि मैं तो सेशन करता हूँ बट आंखें अपने आप ही बंद होती हैं। और मेरा सेशन एक्चुअली दुबई में होता है उस टाइम पर, तो मैं उन लोगों को भी वो कीप क्वाइट करने के बाद बोलता हूँ, आप सुनिए नेचर की आवाज, प्रकृति की आवाज। अच्छा होता क्या है, घर के सामने हम लोगों ने, बहुत जगह तो नहीं है लेकिन छोटे छोटे बहुत सारे प्लांट लग चुके हैं अपने आप नेचुरल, खुशी में कहीं से कोई गिफ्ट मिले, तो ऐसे करके अब काफी प्लांट हो गए और उनकी वजह से वो आने लग गई। और ये कुछ कम से कम 15 दिन से मेरे जीवन में ऐसा एक नेचर, मतलब वाइब्रेशंस आ रही है कि चेहरा अपने आप ही खिलने लगता है। तो जब प्रकृति के साथ बैठते हो, जब आप प्रकृति के साथ मतलब कोई डाइवर्सिटी में मतलब कनेक्ट होने लगती है, तो वो सुख अपने आप आने लगता है। तो मुझे लगता है कि नेचर जो है, पेड़ जो है और प्रकृति का बहुत बड़ा मनुष्य के लिए पावर है। तो ये मेरा प्रैक्टिकल एग्जांपल है। एक मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है। सुबह 4 या 5 बजे तब हम वॉक करने निकलते हैं ना, और नियर बाय ट्रीज होते हैं, तो उनसे काफी ऐसी एनर्जेटिक खुशबू टाइप की आती है कि आपको नींद वगैरह सब गायब हो जाती है और आप एकदम से अलग सी एनर्जी आप अपने अंदर फील करते हो।
तो इस टाइप के भी कुछ मेडिसिनल प्लांट्स भी हैं क्या, जिनका मतलब जो स्मेल के थ्रू भी हमको कुछ बेनिफिट देते हो या कुछ करते हो? हाँ, सप्तपर्णी जो है उसकी खुशबू बहुत मादक होती है। इट इज अ काइंड ऑफ ट्री जिसका फूल भी हरे रंग का ही होता है और वो बहुत फास्ट ग्रोइंग होता है। उसकी स्मेल जो होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है और वो भी मेडिसिनली इम्पोर्टेंट है। तो एक्चुअली मेंटल हीलिंग के लिए भी ये सेंट्स काम करती हैं। तो कुछ लोग जो लोग पुराने दौर में जब कहते थे कि सुबह उठें, उसका कारण यही होता है कि सुबह उठने पर जो खुशबुएं आपको वो 5 बजे मिलेंगी, वो आप 7 बजे कभी महसूस नहीं कर पाएंगे। कि हाँ जी। सूर्योदय से पहले कुछ अलग तरह का स्मेल होती है। आप अगर अगर आप वॉक पे जाएंगे तो मिट्टी की अलग खुशबू होती है, पेड़ पौधों की अलग खुशबू होती है। तो ये एक तरह का आपका मेंटल रिलीफ भी है। इट इज अ काइंड ऑफ हीलिंग प्रोसेस फॉर यू। तो डेफिनेटली प्लांट्स में बहुत ताकत होती है। मतलब उनके अंदर कुछ हम इंसान सब कुछ खोज नहीं सकता। जैसे मैं बता रही हूँ ना कि हमने बोला कि ये चीज इसके लिए यूज है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमने नहीं खोज पाई है लेकिन हैं। इसीलिए ये इस सेशन में मेरा यही कहना है कि मेडिसिनल प्लांट्स तो आप करें ही एडोर, उसके अलावा भी आप सभी पेड़ पौधों के लिए मानसिक लगाव पैदा करें। हाँ जी। और मैम कुछ ऐसे मेडिसिनल प्लांट्स भी होते हैं क्या, जैसे परसों के डिस्कशन में अनार के पौधे के बारे में एक स्टूडेंट ने बताया था कि वो मेडिकली बेनिफिशियल होता है काफी। ठीक है, ऐसे और भी प्लांट्स रहते हैं क्या जिनको हम इधर उधर लगा सके और फ्रूट वाले हों, जिससे क्या हो हाँ कि हाँ, कोई। आप लगा सकते हैं। आजकल तो बहुत ड्राफ्ट वैरायटीज भी आती हैं, जैसे नींबू आप लगा ले। ड्राफ्ट वैरायटीज के आते हैं जिनको आपके पास छोटे स्पेसेस में भी आप लगा सकते हैं। और आप कच्ची हल्दी, अदरक ये भी लगा सकते हैं अपने पॉट्स में। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, मैंने ऑर्गेनिक फार्मिंग करती हूँ, तो मैं कुछ बास्केट्स हमारी जाती हैं दिल्ली एनसीआर में, लोग ये सब्जियां खरीदते हैं। तो जब मैं उसको डिस्प्ले करती थी, वर्चुअल फोरम ने ये एक तरह का मतलब एक्सपोजर दिया मुझे। तो मैं इस एक्सपीरियंस को इसलिए भी यहाँ शेयर करती हूँ, ये एक बहुत अच्छी चीज है कि अ, अभी अ, मैं निकल रहा हूँ ऑफिस कुछ से, तो अभी मीटिंग कर रहा कुछ लेडीज सामने आई और उन्होंने कहा कि वो टेरेस गार्डनिंग करना चाहती है। उनके घर पे छत है और छत पे, और फिर बहुत ही सुख के साथ मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगली बार उन्होंने अपनी मेथी काट के प्लेट में रख के दिखाई किसी ने। और वो मुझे बाकायदा उस पोस्ट पे टैग करती थी कि मैम देखिए, हमने पालक उगा लिया, हमने मेथी वो मुट्ठी भर मेथी, चार चार लोगों के परिवार में, मतलब मेथी, पालक, बैंगन, हरी मिर्च, हरा लहसुन चटनी के लिए, मेडिसिनली भी ये चीजें। तो ऐसा लोगों ने जब ग्रो कर लिया अपनी अपनी बालकनी में, तो वो भी एक तरह से देखा जाए तो एक एक्सपेरिमेंट है जिसको लोग कर रहे हैं। कुछ लोग अनअवेयर भी होते हैं, तब भी वो इस तरह के कामों में नहीं लगते हैं, पर जब इसमें जो जुट जाता है उसको आनंद आने लगता है। Thank you, ma'am. Thank you, थैंक यू। sir. Thank you all for sharing your views and thoughts about this, and thank you for answering the questions. अब अपना डिस्कशन एंड करते हैं। आप लोगों को कोई क्लोजिंग रिमार्क्स देने हैं तो प्लीज। I would thank Pragyata Foundation for inviting such a good, speakers who they have enlightened everyone about their views, and every day you get richer with this. Pragyata should also work with schools and all the best for their future projects. Thank you. Thank you. Okay. Thank you very much. I can say only life is with the plants started, and we should keep plants around us in home, outside, wherever possible to make our air fresh and live healthy. Thank you so much. It's not a things to talk more, but implement more. So try and implement it
in and around and try to save more plantations. Thank you so थैंक much. Thank you. Thank you. यू। डॉक्टर पूरन, आपका माइक म्यूट है सर। अच्छा, ओके, सो सॉरी। मैं इसी में सर एक एड ऑन करना चाहूंगा कि हमारे सामने एक मोगरा लगा हुआ है और मोगरा पर 6-7 फूल खिले हुए हैं। इतनी सुंदर खुशबू आती है और इतना मन मतलब जॉयफुल में चला जाता है कि वो हीलिंग्स अपने आप ही होने लगती हैं। तो प्रज्ञता फाउंडेशन को बहुत शुक्रिया एंड शुक्रिया टू ऑल गाइस, और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष को बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी लोग ऐसी तरह प्रकृति को आगे बढ़ाएं, और थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सर। पारुल, डू यू नीड टू से समथिंग? Thank you very much. It was a great opportunity for us, and it was a very good panel of panelists. So thank you, Pragyata Foundation. चलो, आज का सेशन एंड करते हैं। होप आपको सबको ये अच्छा लगा होगा, और आगे हम ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे। हमसे कनेक्टेड रहिए, हमको फॉलो। थैंक यू।